camera on. So कितने हैं? 18 students आए हैं. So let me share the screen and let us start. मैंने फिर भेजी थी वो उसकी सॉफ्ट कॉपी 7 की. तो मिल गई? हाँ सर. Okay. So let us start. जो हमने कल किया था उसी पे जाते हैं. Okay. एक और आ गया. तो हमने कहा था कैनोनिकल एम्बेडिंग में हमने देखा कि actually for every x, now x is a normal linear space. And x double star जो है, it is all functions f from x star to k by our definition, because this is basically dual of the dual. और dual की जो definition है, so dual की जो definition है, x star is equal to all f from x to k such that f is linear and continuous, such that f is linear and continuous. So of course it is a Banach space. हम कर चुके हैं. तो एक और इसी तरह से जो definition होगी. Now x star is also a Banach space, so I can apply same definition to the dual of the dual, x double star. So it would be all functions f from x star to k such that f is linear and continuous. So these are mappings defined on x star, and x star are certain mappings, है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ. Mappings on x, scalar valued everything. इसी तरह से फिर x double star होगा mappings on x star, scalar valued continuous linear mappings. इसी तरह से x triple star वो क्या होगा? Mappings on x double star, एक star कम करना, है ना? तो हमने कल क्या किया था कि for every x belonging to x, there exists something जिसको हमने कहा था f sub x belonging to x double star defined by f sub x at f is equal to f of x for all f belonging to x star. इस तरह से हमने फिर जब define किया for everything here there is something here, so we defined a map जिसको हमने कहा J, और कभी कभी इसको साई से भी रिप्रेजेंट करते हैं. अगर तुम किसी बुक पे साई देखो तो it is just a different letter. So J को हमने define किया है mapping from x to x star which joins this x with fx, यानी which maps x to this fx. फिर हमने देखा कि जो J है it is an embedding, यानी it is a 1-1 linear isometric map. Yeah, I think ठीक है, isometric map. So in that way Jx is isometrically isomorphic to x, lies inside x double star. It embeds x into x double star, or I can think of x as a subspace of x double star via this connection. Okay, तो मैं फिर इस पे जाना चाहूँगा. So J is a map from x double to x double star जिसका हमने नाम दिया canonical embedding. और मैंने ये कहा था, चलो पहले ये करते हैं. So J of x क्या है? J of x is fx, f sub x. And how is f sub x defined? Oh, so that is fx. Fx at f is equal to x. Very good. So I can think of that J at x applied to f
is equal to fx. मैंने simply substitute किया है ना, मतलब इसको यहाँ लाया. Now this is true for all f belonging to x star. और फिर हम इसको थोड़ा सा improve करने के लिए, क्योंकि x के सभी elements को मैं x से represent करता हूँ, तो it is natural to name elements of x star by small x star. तो इस f का नाम मैं बदल देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि jx at x star is equal to x star at x. नाम मैंने बदल दिया, मैं ऐसे भी लिखते हैं, राइट? ठीक है, फॉर ऑल x स्टार बिलोंगिंग, नाम बदल दिया f का, इसको इसके साथ कर दिया ना, क्योंकि ये कैपिटल x स्टार में रहता है तो इसका नाम स्मॉल x स्टार रख दिया. हाँ, कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं ना, jx कहाँ बिलोंग करता है? jx खुद बिलोंग करता है x डबल स्टार, तो हम कभी कभी jx को लिख देते हैं x डबल स्टार. ठीक है, jx इज इक्वल टू x डबल स्टार. कैसे? लेकिन x डबल स्टार एट x स्टार, ये इस तरह से थोड़ा सा याद रहता है ना. x डबल स्टार और x स्टार, एक स्टार दोनों का कम करो, इट इज इक्वल टू x स्टार एट x. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नाम बदल दिया थोड़े से, तो मैं कंफ्यूज करने के लिए नहीं, कंफ्यूज करने के लिए नहीं, इट्स डिफरेंट नोटेशन. जब तुम डिफरेंट बुक्स पे पढ़ोगे तो तुम बोलोगे अरे ये कहाँ से आ गया. ठीक है ना? The only thing is that jx belongs to x double star. It is defined by this relation, which can be also written by this relation. तो ये हो गया canonical embedding. अब इसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर j onto है, if j is onto, then we say x is reflexive. ठीक है? Now reflexive spaces are special spaces because j of x is equal to x double star. क्योंकि हम कह रहे हैं j is an onto map, means range is equal to codomain, but this is isometrically isomorphic to x. It's always true. This is true when x is reflexive, when j is onto. So we can say x is equal to x double star for a reflexive space. उसमें कोई दिक्कत नहीं. For a reflexive Banach space, and it has to be Banach. Why? Because it is equal to its dual. तो dual तो हमेशा Banach होता है, कोई भी double dual. Sorry. Once I am done there, now let's see which are reflexive spaces. जैसे LP जो है, LP star हमें पता है LQ के बराबर होता है, such that 1 by P plus 1 by Q is equal to 1, but P has to be greater than 1. ये तुम्हें पता है. ठीक है ना? तो what would be LP? अगर मैं x को लेता हूँ LP, then x double star would be equal to LP star का star. That would be equal to LQ star. But LQ star, जैसे कि last time मैंने थोड़ा उस टाइम बताया था, would be again LP by the same reason, right? Provided P is greater than 1. So which is the same as x? यानी LP is reflexive for P greater than 1 less than infinity. All finite dimensional subspaces are reflexive. ये तुम्हारा होम असाइनमेंट. हाँ, इजी है, कहीं से भी. So LPs are reflexive, all p to power summable sequences for p greater than 1. L1 is not reflexive because L1 star is equal to L infinity. So L1 double star बराबर होगा L infinity star, which is not equal to L1. So L1 is not reflexive, LPs are reflexive. There are many reflexive spaces for p greater than 1.
कि तो ये फाइनाइट डायमेंशन सभी के सभी स्पेसेस रिफ्लेक्सिव है, they are isometrically isomorphic to their double door. So ये प्रूव करना rather आसान है, क्योंकि तुम कह सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो इसमें, all norms on a finite dimensional space are equivalent. They give the same topology. Equivalent. और क्या? This was about reflexive spaces. अब reflexive spaces से हम एक रिजल्ट करेंगे, और कुछ है, just a minute. हाँ, अगर हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव बानाक स्पेस है, let me write it down as a theorem. Now, given a reflexive Banach space, अगर कोई x, अगर x reflexive है, by that I mean x is reflexive का मतलब x is the same as x double star, या x is isometrically isomorphic to x double star. Then x star is always reflexive. इसका डोल भी रिफ्लेक्सिव होगा. तो थोड़ा सा दूसरा पार्ट चलो मैं अभी क्लियर करूंगा. Every closed subspace of a reflexive space, every closed subspace of X is also reflexive. So let us start from proof. Now let me call it, let J from X to X double star be the canonical embedding. नहीं, जो हमें पता है canonical embedding, उसका मतलब क्या है? J of X जो है applied to X star is equal to X star applied to X. और कभी कभी हम दो लाइन्स में इसके लिखते हैं कि J of X is equal to X double star. नहीं, यहाँ पर मतलब है now since हाँ ठीक है, या दो लाइन्स में हम ऐसे भी लिखते हैं XX where X double star at X star is equal to X star at X. ये या ये दोनों तरीके सही है. Since X is reflexive, इसका मतलब ये जो मैप है J is on to, let J sub 1 be the canonical embedding from X triple star X star to X triple star, तो इसका डबल डोर be the canonical embedding we have to show that J1 is on to. हमें दिखाना है ना पहला पार्ट में ही कि X star is reflective, यानी इसकी जो canonical embedding है. So J1 is the canonical map from X star to X triple star. उसका मतलब कुछ नहीं है, उसका मतलब ये होगा J1 at X star applied to X double star is equal to X double star at X star. और दो लाइन्स में अगर लिखना हो, बिल्कुल एक एक स्टार बढ़ा देना है यहाँ पे, जो ना यहाँ की डेफिनेशन है. आई होप तुम इसको आदी हो जाओ थोड़े से. और आई कैन से J1 X star वाला जो मैप रेंज में है, where X triple star at X double star is equal to, ये क्यों नहीं लिख रहा है, is equal to X double star at X star. तो ये है हमारा जब मुझे दिखाना है, ये ऑन टू है. ऑन टू के लिए मुझे क्या दिखाना है? For everything here there is a pre-image here, ठीक है ना?
सो मैं दिखाऊंगा कि अगर यहाँ पे कोई है, इसकी प्री इमेज है अंडर दिस J1 मैप इनसाइड X स्टार. सो लेट शुरू करते हैं कोड डोमेन में. लेट X स्टार बिलोंग टू X ट्रिपल स्टार. तो मुझे दिखाना है इसका एक्शन ऐसे है. There exists an X star such that J1 X star is equal to X triple star. Now consider this map. Now let me यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जगह लेता हूँ. अगर X ट्रिपल स्टार बिलोंग करता है X ट्रिपल स्टार में, मैं यहाँ थोड़ा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. X ट्रिपल स्टार का मतलब है X डबल स्टार to K. यानी all scalar valued linear maps from X डबल स्टार to K. यानी X ट्रिपल स्टार जो है वो X डबल स्टार के एलिमेंट्स को भेजता है K के अंदर. ठीक है ना? हाँ. ओके. अब देखो, चलो मैं यहां लिख देता हूं. नाउ कंसिडर द मैप. कंसिडर द मैप X को अगर मैं J अप्लाई करूंगा, अगर मैं इसको J अप्लाई करूंगा, I will land up in X double star. And it is an onto map. It's a 1-1. It's a bijection. 1-1 तो होता ही है. अब onto है तो it's a bijection. फिर अगर मैं इस पे लगाता हूं X ट्रिपल स्टार, राइट, इट वुड गो टू K. अब जो एक कॉम्पोजिशन है यहां से यहां, दिस इज एक्चुअली X ट्रिपल स्टार composed with J. पहले मैंने J लगाया, उस पे X ट्रिपल स्टार लगाया. So this is a mapping from X to K that is linear and continuous. So that means it's a scalar value because it goes from X to K. It's a scalar valued map from X to K. That means it must belong to X star, capital X star. कहने का मतलब, now since J is an isometric isomorphism, and X triple star is a bounded linear operator, bounded linear functional because it is scalar valued. Okay, therefore X triple star composition with J, it belongs to X star. It's a scalar valued map that's linear and continuous on X. Okay, once I've done that, now where of course this J is the canonical mapping. वो तो है ही, canonical embedding, mapping, whatever. मतलब तुम्हें पता ही है. So now for every X double star belonging to X double star, there exists, या चलो लिख देता हूँ, since X is reflexive, वो बात ही है ना, because J is on to, there must exist some X belonging to X such that J of X is equal to X double star, right? Now, if I want to evaluate this J1 applied to X star at, of course, why does this belong? J1 at X star, अगर मैं मैप देखूं, so it would belong to where? It should be actually J1 X star कहाँ belong करेगा? X triple star. So it is a mapping on X double star, right? So अगर मैं यहाँ X double star लिखता हूँ, तो मुझे क्या करना है? थोड़ा सा, ओके ठीक है, बट X डबल स्टार, फॉर एवरी X डबल स्टार कोई भी होगा, it is equal to Jx, so it should be actually J1 X star applied to J of X, है ना, because X double star is J of X, right?
तो उसका मतलब अब ये मैपिंग इस मैपिंग के बराबर है। A mapping is known by its action, जो मैं बार बार कहता हूं। सो अगर मुझे ये किस पे अप्लाई करेगा, एक्स डबल स्टार पे। सो मैं दिखाना चाहता हूँ ये ऑन टू है। लेट मी डू इट दिस वे। हाँ, सो बजाय इसके क्यों ना मैं इसको ऐसे लिखूं। ओके, चलो मैं दैट इज कर देता हूँ। दैट इज एक्स ट्रिपल स्टार एट एक्स डबल स्टार is equal to x triple star applied to j of x. Not bad. Where of course, ठीक है ना, क्योंकि मैंने लिखा j of x1 star where j1 of x star is equal to x triple star। जब मैं ऐसे लिखता हूं तो then that is, इसका मतलब है x triple star का जो एक्शन है, x triple star at x double star is equal to x double star at x star। ये ध्यान में रख कि जब मैं इसको ऐसे लिखूं तो फिर इसका एक्शन ऐसे होगा। एनीवेज कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सो दिस इज एक्चुअली एक्स ट्रिपल स्टार कॉम्पोजिशन जे अप्लाइड टू एक्स। लेकिन मैंने कहा है एक्स ट्रिपल स्टार जे जब होगा इट बिलोंग्स टू एक्स स्टार यहाँ पे ऊपर। So which implies that this is actually equal to x star at x for some x star belonging to x star. So I've got x triple star x double star is equal to x star at x. But x star at x is equal to x double star at x star. है ना? Why? Because it's on to, है ना? Because it is j of x. मैं इसको वापस लिख सकता हूँ ना j of x. Because jx, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो थोड़ा इसको easy बनाने के लिए, this is exactly jx of x star, right? So this is basically x double star at, because j of x is x double star, so it's x double star at x star. लेकिन x double star मैं यहाँ कह चुका हूँ, जब मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया ना j1 of x star को x triple star, तो वहां पे x triple star at x double star is x double star at x star। यानी इसका मतलब बेसिकली है, जब ये मुझे मिले, ये मतलब इक्विवेलेंट है ना? यानी ये तभी है जब ये है, इसका मतलब ही यही, इसका मीनिंग ही यही। यानी x ट्रिपल स्टार एट x डबल स्टार जब बराबर हो x डबल स्टार एट x स्टार, उसका मतलब है कि x ट्रिपल स्टार is equal to j1 of x star for some x। मैंने थोड़ा उल्टा लिखा, वैसे मुझे मतलब बात एक ही है, छोड़ो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, एक ही बात है ना। यानी मैंने लिया था एक, कहाँ गया, मैंने लिया था एक ट्रिपल स्टार, वी हैव टू शो, कहाँ गया, अरे मैंने कहीं तो कुछ लिया था। मैंने क्या लिया था, एक्स डबल स्टार डबल स्टार। हाँ ठीक है, नहीं मैंने ठीक किया, ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे लेना चाहिए था, ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब J1 जो है, चलो J1 is on to, और लिखने की जरूरत नहीं है, तो which implies that X star is reflection, क्योंकि इसका एक प्री इमेज है अंडर X star। कोई ज्यादा उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फ्रेंड, बट ये स्टार्स का जरा ध्यान में रखना, तुम जब इसको पढ़ो एक दो बार तो मुझे लगता है यूज टू हो जाओगे, तो नोटेशन थोड़ा अलग है ना। अब इसका बी पार्ट जरा देखते हैं कि एवरी क्लोज सबस्पेस ऑफ ए रिफ्लेक्सिव स्पेस इज अगेन रिफ्लेक्सिव। इसके लिए थोड़ा हमें हाथ बना कर यूज करना पड़ेगा आई थिंक। ओके, सपोज एक्स इज रिफ्लेक्सिव, and y is a closed subspace. Closed subspace of x, मुझे दिखाना है y reflexive, ठीक है। So let y star belong to
y डबल स्टार, यानी चलो मैं इसको कैनोनिकल मैपिंग, चलो तो यहाँ लिख देते हैं, लेट j sub y be the canonical mapping, be the canonical embedding तो मुझे क्या दिखाना है? So we have to show that, चलो मैं पहले काट देता हूँ, we have to show that jy is bound. तो लेते हैं कोडोमेन, यानी मुझे दिखाना है सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। अब आ रही है, चलो ठीक है। हाँ। तो शुक्र है आ रही है, तो इसको शेयर करते हैं। हाँ, तो मुझे दिखाना है there exists some y belonging to y such that j sub y of y is equal to y double star. By that I mean y double star at y star is equal to y star at x. Now this is what I have to show. तो मैंने लिया y double star. So we define this zeta map from x star to k by zeta of x star is equal to y double star applied, मैंने लिया ये y double star, to x star restricted to y. Well, this is well-defined map. This is a well-defined map. Why? Because x double star when restricted to y belongs to y star. क्योंकि इसकी properties तो कहीं नहीं गई ना. X star is a linear scalar valued continuous map on x. So x star is a map from x to k. तो अगर मैं इसको restrict करता हूँ to its subspace, so it's again linear in continuity की property का कुछ नहीं हुआ. So it must belong to y star. So it is well defined. Y double star at something belonging to y star. So if this belongs to y star, so this is a well defined map. This is a scalar. And of course, zeta of x star जो है, it would be modulus y double star applied to x star restricted to y. Because this is a bounded linear map, this would be less than equal to norm of y double star into norm of x star restricted to y. Now that would be less than equal to, इसको क्या हो गया? मेरा स्क्रीन कहाँ गया भाई? हम कहाँ चले गए? पता नहीं, कोई बटन दब गया. बैक चलो. तुम्हें मिल रहा है कुछ? तुम्हारे सामने क्या स्क्रीन आ रहा है? हाँ सर वो आ रही है. चलो ठीक तो है, अब ठीक है. So this is less than equal to norm of y double star into norm of x star, because this is supremum over a smaller set, this is supremum over the bigger set, right? So once I am done that, it means that this is a bounded linear operator, because I have got modulus of, चलो मैं दूसरी जगह लिखता हूँ, दूसरे पेज. It implies that zeta of x star जो है in modulus is less than equal to norm of y double star into norm of x star. So it clearly shows that, it implies that zeta is a bounded linear operator on what? On x star, right? So which implies that zeta must belong to linear functional लिख लो भाई, क्योंकि scalar valued के लिए हम functional use करते हैं. So it means zeta belongs to x double star, but x is reflexive by our supposition, which implies there exists some x belonging to x such that j of x is equal to zeta.
तो इसका मतलब ये होगा, ये एक्ट ऐसे करेगा जब मैं कह रहा हूँ j of x is equal to zeta. What does that mean? That means jx, जैसे कि तुम्हें पता है, at x star is equal to x star at x. तो ये इसका, या zeta at x star is equal to x star at x for some x. So implies that is zeta of x star is equal to x star at x for all x star belonging to x star. We claim that अगर हमने दिखा दिया ये x y में है, तो हमने क्या कर दिया, हमने शुरुआत कहाँ पे की थी, तो हमने शुरुआत की थी, अगर हम यहाँ से जाएं वापस, हमने आए थे y डबल स्टार से, है ना, उससे हमने जेटा को क्रिएट किया. तो अगर मुझे मिले फिर कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर इन y, so I'm done. तो we claim that this x must belong to y. x में तो है ही, लेकिन हम कह रहे हैं y जो सब स्पेस है x की, ये उसी के अंदर है, उससे बाहर नहीं. Right? Now suppose that's not the case. Suppose x belongs to x but is outside y, does not belong to y. Now since y is closed, by Han-Banach theorem, by दूसरे पेज पे जाते हैं, पता नहीं आज क्या हुआ इसको, by Han-Banach theorem, there would exist some functional x star belonging to x star that kills the whole thing, such that x star at x is equal to 0 for all x belonging to y, and x star at x, इसको मैं ऐसे लिखूं, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, x star at this capital Y is equal to 0, यानी हर एक को किल करता है, and x star at x is not equal to 0. ये हमने किया था Han-Banach थ्योरम की एक corollary. So that is, मैं लिख सकता हूँ इसको, x star restricted to y is equal to 0 and x star at x is not equal to 0. अब उससे हमें मिलेगी कॉन्ट्रडिक्शन. क्यों? क्योंकि फिर y डबल स्टार applied to x star restricted to y is actually y at 0. Therefore, a linear map would send this 0, because this is 0, to 0. So this would be equal to 0. But this is my definition. This is z of x star. But z of x star is x star at x, जो कि 0 नहीं है. तो 0 is not equal to 0. A contradiction. Hence, I have found an x. Hence x belongs to y. And for that, and for each, for each y double star belonging to y double star at y star is equal to y star at x for all y star belonging to y star. That is, I can say jy of y is equal to, मुझे क्या लिखना था, इसका नाम मैंने दिया, मैंने क्या लिखा, ठीक है, इसका मतलब ये है, there exists x belonging to y such that jy of x is equal to y double star. And hence वहाँ पे ये आता ऊपर ना, वहाँ पे y आता कि x y double star of y star is equal to y star of x y star of y. नहीं कहाँ पे, वहीं पे सर, y double star of y star is equal to, हाँ सर. तो देखो ऐसा नहीं है, चलो हम वापस जाते हैं, ये y डबल स्टार कहाँ पे था, अभी तक हम ये क्या कह रहे हैं, ये जो ये x है ना, ये जो ये x है ना, ये बिलोंग करता है x में, मतलब सॉरी, हाँ ये x स्टार, we have found an x such that this is true, right, है ना. और ये जो z of x star है, it is defined as, this is actually defined as y double star applied to y star restricted to y. So, sorry, कहाँ गया अपना, तो मैं वापस जाता हूँ. This is defined like this. So चलो यहाँ पे इसको combine करते हैं, यानी
Z of x star is equal to y double star restricted to x star at y, which I have found to be some x star at x. Right? है ना ये? अरे यार, हाँ है ना ये x star at x. तो कहने का मतलब वो इश्यू नहीं है. इश्यू है कि if x star is a functional on the bigger space, मैंने यहाँ पे लिखा ना y star belong to x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ. I can just take this to be, क्योंकि ये है ना, मैं y में ले रहा हूँ ना, I can restrict. मेरे कहने का मतलब है जब यहाँ पे ये डिफाइंड है ना, this x star जो है restricted to y also belongs to, it belongs to y star. ठीक है ना? तो जब मैं कह रहा हूँ फॉर ऑल एक्स स्टार, तो आई कैन जस्ट रेस्ट्रिक्ट द डोमेन. मतलब यहाँ पर जो, चलो मैं लिख देता हूँ, वायर वाई स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार रेस्ट्रिक्टेड टू वन. ठीक है, क्योंकि ये बिलोंग करता है ना इधर. whenever x star belongs to big x star, तो उसकी जो restriction होगी to the smaller subspace, it always belongs to y star, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी पे कोई चेंज नहीं आएगा. हमने सिर्फ डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया है. आई होप दैट इज क्लियर. आई होप. अगर नहीं है तो कल पूछ लेना, क्योंकि इसमें अब 1 मिनट रह गया है. या अभी पूछ लो, 1 मिनट है, 1.5 मिनट. कोई दिक्कत है अभी इसमें? थोड़ा सा यहाँ पे हो गया क्लियर. थोड़ा सा बस ये है ना, ये इसमें जहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है. एनीवेज, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये तुम्हारा कोर्स, लेकिन उतना भी नहीं है. लेकिन अगर तुम मेहनत करोगे तो हो जाएगा. ठीक, ओके. सो व्हाट लेस देन 1 मिनट. अब इसमें मैं अगर ये रिमार्क कर सकता तो ठीक होता. रिमार्क ये है कि अभी तक हमने क्या देखा कि अगर x इज रिफ्लेक्सिव, किया ना हमने, if x is reflexive, x star is also reflexive. रिमार्क में हम इसका उल्टा भी ट्रू है, क्योंकि अगर if x star is reflexive, मैं इसको बंद करता हूं, तुम फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें लेस देन 1 मिनट है, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा. चलो मैं इसको बंद करता हूं, ज्वाइन अगेन.